Hello students, I Sachin Rajgopalan welcome you all on behalf of Optimum Educators. Today we are beginning with a chapter which is called as Evolution of Life. Let me tell you, ये जो chapter है, ये बहुत ही interesting और बहुत ही significant chapter है, not just for your board examination but also for NEET examination. Evolution, ये नाम लेते ही काफ़ी सारे सवाल हमारे दिमाग में उठ जाते हैं. And humans are known for their curious, inquisitive nature. काफी सारे सवालों से मेरा ये मतलब है कि we start thinking कि ये यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, यूनिवर्स में जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, स्पेसिफिकली हमारा अर्थ कैसे बना, प्रोसेस क्या था जिससे ये अर्थ डेवलप किया गया, और उसके बाद इस अर्थ पर लाइफ कैसे आया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आए. इन सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और फॉर्मेशन ऑफ लाइफ की भी बात कर रहे हैं. वो पहला फॉर्म ऑफ लाइफ, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विच वी कॉल अ सेल, हाउ डिड इट फॉर्म ऑन अर्थ, व्हाट वाज द प्रोसेस बाय विच इट वाज फॉर्म्ड, व्हाट आर द थियरीज विच आर प्रपोज्ड, और वो पहला सेल बनने के बाद why was it necessary to have so many different types of organisms. आज अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो तो आपको कितने सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ माइक्रोस्कोपिक. There are so many different types of organisms that we have around us, right? The number actually goes in millions together. So how did all these forms of life evolve from that single cell? So ये journey जो है evolution का वो कैसे हुआ, and most importantly क्यों हुआ? This is what we are exactly going to study in the chapter called as evolution. So let us first have a look at the concept map, wherein let us understand that what are the different things that we are going to go through while we study this chapter. So when we talk about the concept map, let me tell you the first thing that we are going to discuss is what is the difference between the two terms, origin and evolution of life. याद रखना स्टूडेंट्स, जब मैं कहता हूं origin of life और जब मैं कहता हूं evolution of life, ये दोनों ही टर्म्स में डिफरेंस है, ये दोनों ही टर्म्स सेम नहीं है, राइट? क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. Other than that, we are also going to study about theories of origin of life. जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने कौन कौन से थियरीज प्रपोज किए हैं टू एक्सप्लेन हाउ डिड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ. वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस of different scientists to the study of evolution. So जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो जो डिस्कवरीज किए हैं which has contributed to the process of study of evolution, we will discuss about that also. We will discuss about a very important theory of evolution of life which is called as Oparin and Haldane theory. We will then move ahead to discuss some terms and terminologies which will be essential for us to understand the process of evolution. ये वो terms हैं, ये वो definitions हैं जो हमको याद रखने होंगे ताकि हम आगे के जो concepts हैं evolution में उसको समझ सकें. Other than that, we will also be studying some very popular theories like Lamarckism, Darwinism, and the modern synthetic theory of evolution. So students, these are those theories which have been put up time and again to explain how evolution took place. So these are theories which are not explaining the origin of life, they are explaining how from the first form of life we have got so many different types of organisms that we have on earth today. Post this, we will move ahead to understand the concept of
biological evidences, wherein we will discuss about those evidences, those proofs which will let us know कि evolution हुआ है, evolution एक सच है और evolution कैसे हुआ है. तो उसके लिए जो proof है, जो evidences है, उनको हम biological evidences कहते हैं. उसके बाद हम concept discuss करेंगे जो बहुत ही significant, जो कि है natural selection. हम इसके बारे में थोड़े details में discuss करेंगे. And then we will go to evolution of human being, जहाँ पर हम human ancestors जैसे कि apes, monkeys, shrews, इन सब जो organisms हैं जो evolution के due course में थे, उनके बारे में discuss करेंगे कि उनके characteristics क्या हैं और कैसे हम धीरे धीरे Homo sapiens sapien बने. So let us begin with the chapter. Let me tell you students that evolution ये जो term है ये बहुत ही vast concept है और जब आप universe की बात करते हो, universe एक बहुत ही vast zone है जिसको study करने के लिए scientists सालों से मेहनत कर रहे हैं. Let me tell you that universe में earth एक छोटा सा particle, एक छोटा सा section है. universe तो बहुत ही बड़ा है. It's very very huge. एंड आई एम श्योर दैट जब भी आप नेशनल डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी जैसे टेलीविजन चैनल्स देखते हो और वहां पर आप देखते हो कि हर बार एक नया वीडियो चलाया जाता है कि अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, और हर बार नए थियरीज पुट अप किए जाते हैं अबाउट हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, अबाउट हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, हाउ लाइफ वाज फॉर्म्ड. और हमारे दिमाग में यही सवाल होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस के लिए इतने सारे थियरीज क्यों हैं. हमारे पास एक स्टैंडर्ड थियरी क्यों नहीं है जो हमें यह बताएगा कि हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड. सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ प्रोसेस व्हिच हैज हैपेंड अराउंड, if you talk about formation of earth, it has occurred around 4.5 billion years ago. Yes students, formation of earth की जब हम बात करते हैं, it is a process which has taken place around 4.5 billion years ago. So it's a very very long story. And if I talk about universe, let me tell you that universe is around 20 billion years old. So that's a huge time period, right? 20 billion सालों पहले यूनिवर्स बना है और आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बना है और अर्थ के बनने के 500 बिलियन साल बाद, यानी कि करीब आज से 4 बिलियन साल पहले लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ. यानी कि अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद पहला फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पर आया. सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज फॉर्म्ड approximately 500 billion or rather 500 million years after the formation of earth, right? Now when I talk about the first form of life, it is very important for us to realize that it's a prokaryotic form. Prokaryotic cells क्या होते हैं? वो cells which are basically not having a well-defined nucleus, and from this prokaryotic ancient cell we have got eukaryotic form of life, right? So please understand that the first form of life has not been formed in a fortnight. रातों रात नहीं बना है ये. It has been a very complex process. The condition on earth was very different than when the first form of life was being formed, and the condition that is prevalent on earth today is very different from what it was earlier. Okay, so let us start with a very important term. The term is protobiogenesis. अब इस टर्म का मतलब क्या है? Origin of life on earth is called as protobiogenesis. तो लाइफ जब अर्थ पर बना, जो प्रोसेस से बना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटोबायोजेनेसिस. स्टूडेंट्स याद रखना, आज जब आप
धरती पर से तारे देखते हो, मून देखते हो, these stars are so far away from us. Let me tell you, if you calculate the distance in time, the distance from you to the stars is going to be in years together. सालों का अंतर है. Distance is very huge. इस distance को हम कहते हैं stellar distance. क्या कहते हैं इसको? Stellar distance. So that's the distance between you and the stars. Which means that जब हम star को देख रहे हैं, the light that is helping us to visualize the stars, this light was emitted by star maybe years ago, and it is traveling and reaching us, you know, after a very long period of time. आप अपने अगल बगल में किसी को देखते हो, you are able to visualize it instantly. So if someone is sitting besides me, I'm able to see them very instantly, immediately, right? Because the distance is very close. But I'm talking about stars which are so many millions of billions of miles away from me. So उसमें से जो light emit हो रहा है, वो मुझ तक पहुंचने में सालों लग रहा है. Do you understand what I'm trying to say? So the distance is that huge. So actually I'm seeing something which is in the past. Because it has emitted light in the past which I'm able to see now, because the distance between both of us is very huge. So you can imagine how vast the universe is. And let me tell you, जब universe के formation की बात आती है, तो I'm sure आपने एक theory का नाम सुना ही होगा. Can you guess the name of that theory? क्या मुझे आप बता सकते हो वो theory का नाम क्या है? I'm sure most of you would have guessed. It is called as Big Bang Theory. Big Bang Theory की जब हम बात करते हैं ना students, let me tell you, ये हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे कहा जाता है. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज टेकन एज यू नो far as 20 billion years ago when the universe was being formed. And let me tell you, it was a gigantic explosion. एक बहुत बड़ा explosion था जिसमें से expand होकर ये पूरा universe बना है, ये इस theory का मानना है. So this theory says that one explosion and the expansion which happened because of that gigantic explosion is responsible for the formation of the whole universe. And let me tell you that according to this theory, the sun is referred to as nebulous, students. Now what do I mean by nebulous? Nebulous sun के लिए दूसरा नाम है. And let me tell you, nebulous में क्या है? Nebulous में dust है, nebulous में gases हैं, nebulous में hydrogen है, nebulous में helium है, और उसमें rock like particles है, यानी कि पत्थर जैसे particles. So these particles when they collide with each other, normally अगर दो पत्थर collide होंगे तो वो अलग जा गिरेंगे, but these are those kind of rock like particles which when they collide they will merge, यानी कि जुड़ जाएंगे. Those particles are what we call as nebula particles. Now when these nebula particles collide, they end up merging, वो जुड़ जाते हैं. और millions of ऐसे nebula particles when they went on colliding, we got a huge mass which is spherical in shape, which is a mass of fire, which we today refer to as Earth. Which means there were several nebula particles which went on merging and the structure went on becoming huge in size. So when the structure went on becoming huge in size, which was a mass of fire, because all of this is taking place inside the sun, let me tell you that that mass was very hot. It had extremely high temperature because all this is happening inside the sun. And when this mass was given out or separated from the sun, and when its distance from the sun started increasing, जब इस mass का distance sun से बढ़ने लगा, that's when the temperature in this mass started decreasing. Okay, and when the temperature started decreasing, that's when the conditions started becoming favorable, conducive for life to form. आप ही imagine करो, sun का temperature ऐसा होता है जिसमें sun के नजदीक जाते भी कोई organism जल जाए. तो ऐसे टेम्परेचर पर क्या लाइफ बन सकता है? नहीं बन सकता, राइट? तो लाइफ बनाने के लिए सबसे पहले एसेंशियल चीज ये था कि टेम्परेचर जो है इस मास का वो कम किया जाए. और वो कम कैसे होगा? जब इस मास का डिस्टेंस, इस प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ते जाएगा, तब टेम्परेचर कम होने लगेगा, राइट? सो दैट्स हाउ अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी व्हिच वी कॉल एज बिग बैंग थियरी.
अब हर थियरी की तरह बिग बैंग थियरी में भी कुछ लूप होल्स रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज रहे हैं, जिसकी वजह से ये थियरी आज कुछ सेट ऑफ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो इस थियरी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मानते हैं, जो कहते हैं कि बिग बैंग थियरी सही है, तो कुछ सेट ऑफ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि बिग बैंग थियरी सही नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि इस थियरी के मुताबिक सारे प्लैनेट्स जो यूनिवर्स में है वो इसी तरीके से बने हैं, वो इसी प्रोसेस में से बने हैं। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि इफ द प्रोसेस हैज बीन सेम, हाउ कैन द प्रोडक्ट बी डिफरेंट? Because if you say Earth has been formed from the same process, Jupiter or Mars has been formed from the same process, then why are Jupiter, Mars and Earth so different from each other? Because the process of formation is same, so the product also has to be same. So these kind of several questions have been raised on this theory. Because of this theory, I know because of this question, this theory has been, in a lot of controversies, because of which it is not a universally accepted theory anymore. Though part of this theory is believed very strongly by several scientists across the globe. Okay, now let us see what are theories of origin of life. So this is a very interesting and funny concept too. So let us start with theories of origin of life. And let us start with the very first theory, students. इस theory को हम कहते हैं theory of special creation. अब इसका क्या मतलब है? Let me tell you, इस थियरी को पुट अप करने वाला बंदा, he was a Spanish monk. Spanish monk यानी कि a religious person from Spain. His name is Father Sudres. Okay, now he was the person who proposed this theory, and he said that Earth and all living beings on earth are created by a supernatural power called God. हम भी यही सीखते हैं, several religions preaches the same thing, that earth और सारे जो living organisms है earth पर, उनको बनाने वाला जो power है उसको हम भगवान कहते हैं, God कहते हैं, right? But let me tell you students that science does not believe in the concept of God, क्योंकि science का पहला सवाल होगा what is the proof, right? And because there is no scientific proof to explain the existence of God, let me tell you that this theory has not been universally accepted. Please understand that in science it is very important to have evidences for whatever you say, and until and unless you can prove what you claim, that theory cannot be universally accepted. And that's the reason why the theory of special creation, which was put up by a Spanish monk called Father Sudres, is not a universally accepted theory, because according to this theory, God or a supernatural power has created earth and all living organisms, and we have no proof to prove this, right? Though we know that all religions are going to support this particular theory, because religions promote this belief that God is the creator of life, right? Moving ahead, the next theory is called as cosmozoic theory, or it's also called as panspermia theory. Now, when we talk about this theory, let me tell you that this theory has been put up by a scientist by the name Richter, and he proposed this theory in the year 1965. Okay, now let me tell you that Richter के हिसाब से अर्थ पर जो लाइफ है वो किसी और प्लैनेट से आया है, वो किसी और डिस्टेंट प्लैनेट से आया है, दूसरे प्लैनेट से आया है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका ये मतलब है कि अर्थ से पहले किसी और प्लैनेट पर लाइफ था और वहां से वो लाइफ यहां पर ट्रांसफर हो गया. Okay, now I know it is very difficult to believe this concept and sounds funny as well as to how did that happen. So according to Richter, let me tell you that life came from a distant planet. So let me tell you cosmozoa and panspermia. ये दोनों टर्म्स का मतलब होता है स्पोर्स और बैक्टीरियल सेल्स.
यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो याद रखना इनका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो रिच्टर के हिसाब से कॉस्मोजोआ एंड पैंस्पर्मिया वेर एनक्लोज्ड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज मेटियोराइट्स। सो मेटियोराइट्स के अंदर बैक्टीरिया भर के, स्पोर्स भर के उनको अर्थ पर फेंका गया, इज व्हाट रिच्टर वांट्स टू से, फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट। एंड व्हेन दीज मेटियोराइट्स स्ट्रक the land of earth, it broke and bacteria and spores came out of the meteorites and came from a distant planet onto the earth, which means that probably organisms wanted that even other planets should have life, and that's why they tried to introduce life into a different planet, which we today call as earth. Obviously ये believable नहीं है, क्योंकि काफी सारे सवाल उठते हैं कि मेटियोराइट्स कैसे ट्रैवल किए, कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया. So obviously there is no proof for all of this, because of which even cosmozoic or panspermia theory is not a universally accepted theory, right? आगे बढ़ते हुए next theory is called as spontaneous generation, or it's called as abiogenesis theory, or it is also called as autobiogenesis theory, right? अब spontaneous का मतलब क्या होता है? अपने आप. Auto also means self, right, on its own. Abiogenesis, A stands for absence, bio stands for living organisms. यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि living organisms came from non-living things, यानी कि non-living things से living organisms का जन्म हुआ, ये इस थियरी का मतलब है. ये spontaneous generation या abiogenesis या autobiogenesis का मतलब है. This theory was proposed by Greek philosophers and this was proposed in 600 BC, which is before Christ. So very, very old theory. And let me tell you that father of biology, Aristotle, supported this theory. Now it is very ridiculous to even imagine that how would life evolve out of non-living things, right? कैसे possible है? तो कुछ लोगों ने इसके लिए examples भी दिए. So they said that if you if you place a piece of meat का एक टुकड़ा, flesh का एक टुकड़ा बाहर open में रखोगे, after an hour or so you will find a lot of flies around it. मक्खियां दिखाई देंगी उसके इर्द-गिर्द. So you know what they said? They said that meat would give birth to flies. How ridiculous, right? How is it possible that meat would give birth to flies? It's not possible at all. So there were a few scientists who decided to disprove this, who said that it's not possible for life to come from non-living things. Non-living things से living organisms नहीं बन सकते. अब ये scientists कौन थे? So these scientists were Louis Pasteur. I'm sure you have heard his name time and again. Francisco Redi, and we have Spallanzani. So ये वो तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ये प्रूव करने का that life is not coming from non-living things, right? So let me show you what they did to prove this. तो जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा था कि आप एक मीट का पीस बाहर रख दो, उसके इर्द गिर्द मक्खियां भिन भिनाएंगी, एंड देन यू कैन सी मैगेट्स, यानी कि छोटे लार्वल फॉर्म्स ऑफ दीज फ्लाइज ऑन द फ्लैश. तो ऑब्वियसली इन्होंने जब ओपन कंटेनर में एक पीस रखा फ्लैश का, मीट का, तो उन्होंने देखा उसके इर्द गिर्द मक्खियां थी, and there were also maggots, that's the larval forms of the flies on the flesh, right? Then what did they do? उन्होंने एक दूसरा कंटेनर लिया, उसमें उन्होंने मीट का एक टुकड़ा रखा, उसको वायर गॉस से कवर किया, बांधा. तो उन्होंने देखा कि वायर गॉस के ऊपर there were lot of flies and there were maggots, which means that the flies were getting attracted towards the meat and they were laying their eggs on the meat. Okay, that's the reason why you can see even on the wire gauze you can see that they have laid their eggs which have now developed into maggots,
but on the meat there is nothing. So if meat would have given birth to flies, तो मुझे इस बीकर के अंदर, इस जार के अंदर भी फ्लाइज दिखने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहे हैं, राइट? यानी कि मक्खियां जो है, जो फ्लाइज है, दे आर स्मेलिंग द कंपोनेंट ऑफ द मीट एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज दे नो दैट इफ दे ले देयर एग्स नियर द मीट, द डेवलपिंग लार्वल फॉर्म्स विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन. So they are doing this in search of nutrition. So it doesn't mean that meat is giving birth to flies. You can also see there is another modification जहां पर उन्होंने ग्लास जार में मीट का पीस रखा हुआ है और उसको वुडन कॉर्क से बंद कर दिया. अब इसका स्मेल भी बाहर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से even flies are not seen around it, which is a clear-cut indication that flies try to smell the flesh and move towards it. But when you have sealed it airtight, you are not able to see any flies or any maggots around it, which is a clear-cut indication which disproves the spontaneous generation theory, which says that the meat cannot give birth to flies. So जो spontaneous generation का theory है, that is disproved by this experiment. Is that very clear? Okay. Now we are moving towards the next part of the same theory. So Louis Pasteur